Assalamu alaikum, dear students. So far, we have discussed laws of production with reference to short period or with reference to short run. और वहाँ हमने तीन laws discuss किए, law of increasing returns to a factor, law of constant returns, and then diminishing returns. And we also discussed a combination of all the three laws, that's law of variable proportions. Now let us today discuss another component of the laws of production, that's returns to scale. As you know, in the long run, all factors of production become variable. No factor remains fixed. In this period, production of a commodity can be increased by increasing all the factors in the same proportions. If factors are increased at the same proportion, the scale of production increases and the corresponding behavior of output is studied as returns to scale. Thus, returns to scale refers to behavior of output as well all factor inputs are varied in same proportion. Are you getting me? Return to scale refer to the behavior of output as all factor inputs are varied, changed, increased or decreased in the same proportion. ठीक है ना? Now, how does output behave when we change the scale? When we increase the scale, will it increase increasingly? Will it increase constantly? Will it increase or will it decrease? So it's a long run concept. All this is possible only in long run. So when we discuss returns to scale, we discuss returns to scale with reference to long run. Because we are changing the scale, we are changing all factor inputs, and it's possible only in the long run. When we do so, it assumes three shapes, or we can say there are three aspects of returns to scale, or three phases of returns to scale. Behavior of output, when all inputs are changed in the constant proportion so that the scale of production changes, may show three possibilities. तीन possibilities हो सकती है output की. As you see here, we may witness increasing returns to scale. We may witness constant returns to scale. And we may also witness decreasing or diminishing returns to scale. Now, this needs to be discussed one by one. Now, let us first discuss increasing returns to scale. This is the first phase of returns to scale. It is increasing returns to scale, and increasing returns to scale occur when, याद रखिए, it occurs when a given percentage increase in all factor inputs in some constant proportion causes proportionately greater increase in output. For example, if the scale of inputs is increased by 10%, for example, अगर हम इसे 10% इंक्रीज करते हैं, जैसे आप यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द स्केल बाय 10%. We are increasing the scale by 10%. First it was this. First was this. This is the first scale.
5 10 15 5 10 15 20। यहाँ से भी हम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, किस में? ये आउटपुट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स, एंड वी आर इंक्रीजिंग द इनपुट्स इन द कांस्टेंट रेशियो, दैट्स फैक्टर रेशियो रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इनपुट्स, यहाँ से हम इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, यहाँ से आउटपुट बढ़ता है। इफ 10% इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स कॉजेज से 15% इंक्रीज इन आउटपुट। अगर हमने इनपुट्स 10% इंक्रीज किए तो हमारा आउटपुट 15% बढ़ता है। Likewise, 15% increase in factor inputs causes 25% increase, or 15% causes 20% increase in output. Thus, any percentage increase in output, any percentage increase in inputs is causing a greater percentage increase in output. This is increasing returns to scale. तो यहाँ आपने याद रखना है. So the rate of increase in output is greater than the rate of increase in inputs. We are changing all the inputs, we are all increasing all the inputs, but the increase in the output is greater than the proportionate change. For example, यहाँ हमने inputs 10% increase किए, output 15% हो गया. अगर ये 20 करेंगे, ये 40 हो सकता है. What is it? There is a greater change in output than the inputs. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एट ऑपरेशन। ऐसा क्यों होता है? ऑकरेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल? बेसिकली जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, दीज आर द सिचुएशंस, ये वो हालात हैं in which increasing the scale of production reduces the unit cost of production or raises output per unit of the factor inputs. ऐसे हालात पैदा होते जब हम स्केल चेंज करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा आउटपुट बढ़ता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो उससे हमारे कास्ट्स कम होते हैं, आउटपुट बढ़ता है। तो दो तरह की स्केल्स होती हैं। वी हैव इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल economies of scale and external economies of scale. These economies are responsible for the operation of increasing returns to scale, but we also witness decreasing returns. तो जब economies पहले पैदा होती हैं, लेकिन a stage comes when diseconomies come in, और ये इन इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का रोल होता है कि वी विटनेस increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. So before going to explain the three phases in a detailed manner, first we have to discuss these economies and diseconomies of scale. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे, व्हाट आर इंटरनल इकोनॉमीज एंड व्हाट आर एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड व्हाट आर डिसइकोनॉमीज। उसके बाद वी विल डिस्कस द लॉज इन डिटेल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।